Somehow I think he was unable to come, so I am replacing him, and that's just by accident, that I'm replacing him because I was just a guest, and I came just to, watch this program. So it's a great honor and privilege to be presiding over this session. And let's move forward. Of course, let me just introduce my co-chair, Mr. Rajesh Trivedi. He's a consultant, and sir, if you would like to give us a brief about yourself. Namaskar. से 22 years से पंजाब डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में काम कर रहा हूँ और मेरा एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड प्रेजेंटली जो दिल्ली से मेयर तक रेपिडेट बन रहा है उसमें एज ए डिसेबिलिटी एक्सपर्ट। हमारी क्वालिफिकेशन क्रॉस डिसेबिलिटी भी है और आज जो रीजनेबल एकोमोडेशन की बात चल रही है, एक्सेसिबिलिटी भी चल रही है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा। जिस सरकार एक स्लाइड में आपने बहुत सारे वर्ड देखे थे ना, अपंग, विकलांग, यह हुआ, मैं सोचा था कि एक और वर्ड इसमें जोड़ दीजिए, लंगड़ा आम। आपने नाम सुना होगा ना। इससे एक बड़ी लंबी कहानी आज मैं सुनाऊंगा अंत में कि लंगड़ा आम पे हमने कितनी काम किया है। ये भी बड़ी चैलेंज है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी लोग मिलेंगे। और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है रीजनेबल अकोमोडेशन में, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। डेफिनेटली यू फील गुड हमारी एक्सपीरियंस को, ये बिलीव है। थैंक यू एंड मैं को देता हूँ ताकि जल्दी से सेशन को कंक्लूड कर सके। थैंक यू। ऐसे ही थोड़ा लेट चलते हैं, तो हर स्पीकर को हम 10 मिनट का टाइम देंगे, 10 से ज्यादा, 10 is okay, थोड़ा हम डिले हो जाएंगे, but I think let every speaker get a fair chance. सब प्रिपेयर करके आते हैं और बोलना चाहते हैं, so 10 minutes, not 1 minute. Okay, so the first speaker is Mrs. Sangeeta. Sangeeta Jha, and second is Disa Kachera. Disa, please आ जाइए। उसके बाद आयुषी रमन, चांदनी तनेजा एंड सौरभ चंद्र। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट पे आ जाओ। So good afternoon all. Till morning to this time, हम लोग रीजनेबल एकोमोडेशंस की बात कर रहे थे। उसके सेकंड स्टेप्स पे आते हैं, जहां हमें गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम स्पेशली फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन में एक्सेसिबिलिटी इंक्लूसिव प्रैक्टिस किस तरह से चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए 3 फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहला फैक्टर जो फर्स्ट स्लाइड पे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी, जिस स्कूल्स की बात करते हैं, एवरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैव द स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, faculty, students and all. In सबको we have to be aware regarding what? Regarding this inclusive practices. If any PWD हमारे पास आते हैं, तो अगर हमारी इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से अवेयर नहीं है, एक स्टेप भी आगे फॉरवर्ड होना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एवरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी हैव द राइट, उनके पास होना जरूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जहां पर हर पीआईडीडी की बात सुनी जाती है, पीडब्ल्यूडी की बात सुनी जाती है, जो वो बोले उनकी बात को सुनना एक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सेसिबल कमिटी।
एक्सेसिबल कमेटी को डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है, जो कमेटी माइन्यूटली इन सभी चीजों पर नजर रखे कि क्या वहां पर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट चल रहा है कि नहीं, एक भी स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए आ रहे हैं क्या उनको पूरी तरह से हेल्प करनी की जा रही है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। Next part is monitoring and evaluation mechanism. If colleges and university have the governance or inclusive practices की हो जाएगी, then we move to the monitoring और evaluation systems होना बहुत जरूरी है। Monitoring और evaluation system में सबसे पहले we talk about the data collections method. Data collections method में we have n number of things like you can use the survey method, you can use the focus groups, you can do the interview or the PIDD. आप कॉलेज में आए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आप किस तरह से आपको हेल्प की जरूरत है, तो यहाँ पर हम डेटा और भी पर्सनली टॉक टू देम, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के इस डेटा के साथ हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क में वी विल चेक द एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसा होना चाहिए। जैसे सुबह से सर भी बात कर रहे थे कि एक्सेसिबल होना चाहिए, रैंप होना चाहिए कॉलेजेस में, कम्युनिकेशंस बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे इजी रेट की बात हुई, अगर इजी रेट हम शुरू से ही देंगे तो स्टूडेंट्स के पास पीआईडी के पास कहीं भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा, दे कैन एबल टू टॉक टू एवरी पीपल, बहुत इजीली वो बात कर सकेंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। डेटा कलेक्शन हो गया, इवैल्यूएशन मेथड हो गया, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस अगर हम करते हैं, वी नो अबाउट द व्हाट इज द इंप्रूवमेंट क्राइटेरिया इन हायर एजुकेशन। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस के लिए हमें इन तीन मेथड को लेकर के चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सो वी फिक्स सम इंडिकेटर्स। अगर हम वी डिजाइन सम इंडिकेटर टू मेजर द accessibility and inclusive practices in higher education. What is the accommodated rate? एक ईयरली प्लान अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 2023 से 24 में वी कैन प्लान कि हमें टारगेट करना कि मेरे कॉलेज में 8 स्टूडेंट्स आए। क्या 8 स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में आए? क्या हमने उन 8 को एकोमोडेट किया? व्हाट इज द रेटिंग सिस्टम? वी हैव टू डिजाइन in this. Faculty and staff in regular, we can arrange the workshop, we can arrange the seminar. For whom? For faculty who directly connect to the PIDD, who directly connect to the admission department. Accessible technology adaptation. सुबह से टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बात हो रही है। हायर एजुकेशन में दिए जाने वाले जितने भी मटेरियल हो, इजी रीड में हो, पढ़ सके, टेक्स्ट टू स्पीच, जो अभी थोड़ी देर पहले पूजा ने इसको बताया है। Retention and graduation rate. We have to also focus what is the retention rate. अगर किसी सेशन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, क्या वो 3 इयर्स कंटिन्यू हो रहे हैं? क्या उनका ड्रॉप आउट एरिया है? क्यों ड्रॉप आउट्स है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन दैट। हमें ये पहले से ही डिजाइन करने की जरूरत है, क्या डू है, क्या डू है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज। किसी भी हायर एजुकेशन में पीपल विद इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज लोगों के आउटकम और इंप्रूवमेंट, क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द इंप्रूवमेंट, इन दोनों को फोकस करने के लिए वी विल डिजाइन द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज में अगर मैं बात करूं तो नीड असेसमेंट, सबसे पहले नीड असेसमेंट। We can use so many assessment tools. We can identify the what is the need. We can identify the what is the strength of the child. जब तक हायर एजुकेशन में दोनों चीजों को नहीं जानेंगे तो हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत, मैं पर्सनली जब मैं कॉलेज में जाती हूँ, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चॉइस करना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट सब्जेक्ट्स? इवन कॉलेज आपको गाइड नहीं करेगा, डिपार्टमेंट आपको गाइड नहीं करेगा। यू आर अ फर्स्ट पर्सन, वी प्रोफेशनल्स आर रेडी टू चूज द सब्जेक्ट। अब अगर आपको नीड नहीं पता है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, हाउ कैन यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट? सो वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस कि हमें उसकी नीड और असेसमेंट को जानना बहुत जरूरी है। रेगुलर सर्वे एंड फीडबैक मैकेनिज्म, इससे हम जान पाते हैं कि हायर एजुकेशन में स्टाफ, फैकल्टी, स्टेक होल्डर एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन से कितना अवेयर है। ठीक है, इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग हो, इसके लिए शॉर्ट टर्म टेस्ट भी वी कैन करेंगे। अगर लगता है कि किसी स्कूल कॉलेज में पीआईडी जा रहे हैं तो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म
1 डे 2 डे का क्विज टाइप से बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर सर्वे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो सुबह से डिस्कशन हो रही थी, वी कैन यूज दोज सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर से मैं फैकल्टी को अवेयर हम करा सकते हैं एंड फैकल्टी कैन यूज दोज सॉफ्टवेयर इन द इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव। इफ यू गेट द डाटा, अगर आपके पास डेटा आ जाता है बहुत सारे, तो आप किस तरह से डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने वाले और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपके किए हुए काम को, आपकी जो भी इम्प्रूवमेंट हो, दैट दूसरे स्पेशल एजुकेशन के जो भी कोलैबोरेट करेंगे जिसके सब्जेक्ट संस्था के साथ, वो आपकी इन चीजों का यूज कर सकता है। Now we move to the compliances with legal and regulatory frameworks. इंडिया में डिसेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लॉ और एक्ट बनाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द आरपीडब्ल्यूडी 2016। इस आरपीडब्ल्यू 2016 के सेक्शन 16 में राइट टू एजुकेशन, यू ऑल नो अबाउट द कंपल्सरी एंड राइट टू एजुकेशन। एक्सेसिबिलिटी, मैंडेट एक्सेसिबिलिटी इन द पब्लिक बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस में होनी चाहिए। तो वी ऑल फोकस ऑन दिस, इस पे भी फोकस करके हम एक रीजनेबल एकोमोडेशन तक पहुंच सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बहुत जरूरी है। अगर वहां पर हमारे पास दोनों तरह के लोग हैं, मेनस्ट्रीम एंड डिसेबिलिटीज, वी आर वेरी मच केयरफुल कि वहां उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को नहीं होना। नेक्स्ट, compliances with the legal and regulatory में second आता है UGC. UGC have the very much good guideline regarding to the accessibility and the inclusion. जैसे कि गाइडलाइन है ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, accessible higher education institutions, क्या each and every college जो they use the method, they use the teaching learning process, the support services, क्या वो as per our UGC norms है या नहीं, we have to take care of that. Next, the provision of facility for the person with disability in the universities and colleges, like provide ramp, accessible restroom, assistive technology. These are supporting services उनके colleges में है या नहीं है, we have to be taken care of that. Next है Ministry of Education initiative. हमारे देश में मिनिस्ट्री ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के मैंडेट किए हुए हैं। NEP, you all are aware about the NEP 2020, जहां पर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही गई है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना इसकी भी बात कही गई है। नेक्स्ट है स्कीम एंड ग्रांट। क्या PIDD के लिए उस कॉलेज में प्रोविजन है, स्कॉलरशिप के बारे में उनको अवेयर कराया गया है कि नहीं, असिस्टिव डिवाइसेस अगर यूज करते हैं तो उनके लिए है कि नहीं। Every colleges have the special educator की appointment होना चाहिए, not only schools में, colleges में भी ऐसे special educator हो जो उनके personal problems को और बहुत सारी चीजों को उनकी डायरेक्ट उनसे एसोसिएट होकर के वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, compliance mechanisms. हायर एजुकेशन में जो भी हमने एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाता है उसको मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए देयर इज अ सिस्टम, रेगुलर आप इंस्पेक्शंस करवाइए, ऑडिट करवाइए वहां पे हायर एजुकेशन में कि जो भी चीज आप गाइडलाइन फिक्स किए हैं क्या वो गाइडलाइन फ्रूटफुली चल रहा है या नहीं। एक कंप्लीट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैम ने भी डिस्कशन किया था। अगर उस कॉलेजेस में PIDD की बात नहीं सुनी जा रही है तो कम से कम उसको इतना अवेयर कर दे कि वो वहां जा करके अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सके, रजिस्टर करके वहां अगर रजिस्टर करके रखेंगे तो पीपल कैन उसको देखने के बाद लोग जो है उनके रजिस्ट्रेशन के बाद उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रेगुलर वी कैन ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप, सेमिनार, जहां पर फैकल्टीज की आकर के अवेयर कर सकते इस प्रोग्राम को, डिसेबिलिटी लॉ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, now we come to the best practices in implementing reasonable accommodation. UDL की बात सुबह में भी की, Universal Design of Learning. Why we need UDL? Because every child has a different need.
Every child का educational background जो होता है वो कुछ और होता है हमेशा. Have different attention span and interest. Have different language abilities. Have different cultural backgrounds. So for this point of view, we need a UDL, universal design of learning. So UDL have some principle. Next. You already know these principles: representation, expressions and engagement. ठीक है? Engage करिए, उनको ऐसा चीज दीजिए कि वो मोटिवेट होकर आपके पास आए. मोटिवेट होकर आपके पास आ रहे हैं, यू कम टू रिप्रेजेंटेशंस, ऐसा मटेरियल दीजिए, ऑडियो वीडियो दिखाइए उनको, उनके बैकग्राउंड को, उनका कंटेंट ऐसा दीजिए, उनके लर्निंग साइड को समझिए ताकि वो आपके पास रिप्रेजेंट हो सके. देन कन्वर्ट इनटू एक्शन फॉर एक्सप्रेशंस. उनको ऐसे एक्सपर्टीज बना दीजिए जो भी आप सिखाए हैं वो एनी एनवायरनमेंट में दे कैन एक्सपीरियंस. So these three principles are very much important for universal design of learning. Now, we also design the individual accommodations plan. अभी जैसे सुबह बात हुई थी, किसी ने कहा कि कॉलेज में आगे नहीं बनता, तो हम ये प्लान को भी नहीं बनता है और हम बनाना नहीं चाहते. तो इंडिविजुअल accommodations प्लान के हेल्प से हम उनके नीड असेसमेंट को समझ सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को समझ सकते हैं. नीड और चैलेंजेस को समझने के बाद उनके अकॉर्डिंग हम जो भी उनकी जरूरत है हम उनको ये दे सकते हैं. आप इस नीड को, चैलेंजेस को आप कैसे कलेक्ट करेंगे? वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीपल. मेडिकल प्रोफेशनल से हम बात कर सकते हैं, जो डायरेक्ट पीआईडीडी के साथ काम करता है एजुकेटर्स, उनसे हम बात कर सकते हैं. स्टूडेंट्स खुद अपने बारे में बताएंगे कि व्हाट वी नीड. So this is the accommodations plan. Goal, as per the need, as per the challenges, as per the strengths, we can design a goal. Smart goal. सबने पढ़ा होगा IEP में smart goal. ठीक है? और उसके बाद as per smart goal, we can implement the strategies. So this is all about. Now we call Nitisha, Technology Department. जोर से में ताली बजाएंगे, ऐसे लग रहा है खाना में नमक कम था. अपने कैटेगरी वाले हैं ना, अपने कैटेगरी तो ज्यादा होने ही चाहिए. क्या बात है, सबको नहीं डालना चाहिए. So, what is technology? Technology is used in education to aid communication, support activities of daily living, and to enhance learning. We'll go for technology-based accommodations. For examples, technology offers powerful tools and resources supporting individuals with IDD in higher education. These accommodations leverage assistive software, adaptive devices, and online learning platforms. Here are few examples of technology-based accommodations. Number one is assistive software, and here we include text-to-speech software, screen magnification, speech recognition tools, word prediction programs, and screen readers as well. Then we go with adaptive devices. Devices, any tool including a product, system, or a machine used to help people with disabilities or impairments accomplish activities of daily living is called adaptive devices. Here is the example: ergonomic mouse for special students and ergonomic wheelchair, that means electric wheelchair, which is just made for the person who is particularly use that. Next is online learning platforms, learning management system, multimedia resources, and educational apps. Training and support for students and faculty using technology-based accommodations effectively. How they use it, how they implement it. In this thing, they are engaging, communicating, learning, and creating something new. To provide comprehensive training and support to students with IDD. Assistive technologies effectively, including tutorials, workshops, and one-on-one assistance. Next is universal design principles and available technology tools for supporting students
with disabilities and continuing rehabilitation education, that means CRE programs, which we are continuously attending. Establishing ongoing support mechanisms, help-based technical assistance, hotlines, online resources to address questions, troubleshoot issues, chatbot, and provide guidance on using technology-based accommodations. So, in the end, by summary, I would like to include that by implementing these best practices in which reasonable accommodation, higher education institutions can create inclusive learning environments that support students with IDPs diverse needs and abilities, facilitating their academic success and personal growth. Thank you. Now, I've got you, Ayushi, please. And how much do you know about the Indian? Name is the another thing. Understanding it and using it. Understanding it and using it. अभी तक हम लोग सुन ही रहे थे ना. So let's have the next CRE. Yes, we will call the two people to talk about it. इसको और बड़ा करो 95 करो. और बड़ा हाँ और बड़ा और दे दे और डब्बे में बड़ा डब्बे को बड़ा नहीं सर उतना ही होगा उतना ही. Good afternoon, one and all present here. I am Ayushi Raman, audiologist and speech language pathologist. I graduated from Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore, and now I am currently working as a clinical audiologist in West Urban Clinic. So my presentation today highlights the role of speech and language pathologists in inclusive education of adolescents with intellectual deficit, a case report. So the DSM-5 diagnosis of ID requires the satisfaction of 3 criteria: deficits in intellectual functioning, deficits in adaptive functioning, and the onset of these deficits should begin during childhood. The basic signs and symptoms include gross motor delay, mainly observed during infancy, and language, learning, and academic difficulty during preschool and early school years. Individuals with mild ID are slower in all areas of conception, social development, and daily living skills. Moving on to the case presentation, a case aged 14 years female reported to speech and language department with the complaint of difficulty in understanding language, communication, and social interaction skills with peers. History of neonatal jaundice was reported, and parental perception reveals a delay in language, social, and cognitive developmental milestones. Communication mode was predominantly in simple sentences. Psychological test results indicated mild intellectual deficit. Comprehensive assessment was carried out by speech language pathologists, focusing on the domain of cognition, language, pragmatics, and literacy skills. The following tests and tools were administered: clinical evaluation of language fundamentals, self-5, milestones for early communication development, pragmatic profile, dyslexia assessment for language of India, and quick phonological awareness screening. So table 1 contains the result of clinical evaluation of language fundamentals. So the total score of 71 was obtained, which was suggestive of moderate severity of language disorder. Better scores were obtained in the domain of word class, following directions, formulating sentences, and recalling sentences, whereas poorer scores were obtained in the domain of understanding spoken paragraph, word definition, sentence assembly, and semantic assembly. Table 2 contains the results of milestones for early communication development. For pragmatics, the age range was 7 to 9 years. For semantics, 5 to 7 years. Syntax was Brown stage 5, and phonology articulation was mostly error-free. Some difficulty with complex words may persist.
Table 3 contains the scores of pragmatic profile score. Better scores were obtained for section 3, that is non-verbal communication skills. Poorer scores were obtained for section 1, that is ritual and conversation skills, understanding of jokes and humor. And section 2, that is ask for gifts and response to information. Now the graph shows the scores of quick phonological awareness score. Quick phonological awareness scores illustrated better scores for rhyming production, recognition, word awareness, and syllable awareness, whereas poorer scores were obtained for initial sound identification, final sound identification, sound segmentation, and sound blending. Deletion tasks could not be done as 6 consecutive errors were made. Tally was administered and the total score of 25 was obtained, which suggested that the child was potentially at the risk of dyslexia. So the aim of the present case study is to understand the academic challenges related to attention, memory, generalization, language, reading, writing, and math skills in adolescents with intellectual deficit. Intellectual disability has an impact on all these significant language literacy and communication skills. Hence, the provisional diagnosis for is deficient in speech and language skills secondary to intellectual deficit. Now, phonological awareness is also significantly weaker in children with ID. There was a study conducted by a channel in 2013. Found that weakness in phonological awareness in children with ID could be related to specific weakness in phonological short-term memory or phonological working memory. Therefore, a comprehensive investigation in adolescents with intellectual disability has highlighted the deficits in language, cognition, social and academic skills that eventually require a multidisciplinary approach. Future direction of the study should focus on early identification and intervention programs, adequate training and awareness, and planned strategies in inclusive settings will help in making a better prognosis and quality of life for individuals with intellectual disability. Concluding my presentation, I would like to say that detailed evaluation gives information about different domains, which eventually help in developing appropriate intervention strategies to enhance language, cognition, pragmatics, and academic skills in individuals with adolescent ID. Thank you. अब गाली बजने से लगता है हॉल में कोई है पता नहीं चलता था हमारे बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं ताली बजाते हैं। अरे एनर्जी चाहिए कि बच्चों को तो reinforcement की बात है बच्चों के भाई को Here, as they said, it's a good that the IUC has given that one good idea that we need to consider the language and communication part for the PIDD while we talk about the education or academic. Good afternoon, everyone. Myself Saurabh Sharma, and I am here with my co-presenter Chandni Taneja. We are going to present our poster on the topic of efficiency of speech-language therapy in facilitating higher education in adults with intellectual disability. A case study. In the introduction, as we all know, intellectual disability has a significant sub-average general intellectual functioning concurrently with deficit in adaptive behavior that adversely affect child's education performance. Total 3% of world population who have IQ below 70. Adaptive skills includes conceptual skills, social skills, and practical skills. Conceptual skills that includes language and literacy, money concept, time concept, number concept, and self-direction. Social skills includes interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, social problem solving, and ability to follow rules. Practical skills includes activity of daily living. If we talk about communication and literacy, up to 90% of adults with ID will experience communication difficulty at some stage of their lives. And these difficulties are understanding and expressing language, difficulty in social skills, reduced speech intelligibility, struggle to access formal education at all levels. The goals of speech and language therapy: first, enhancing the perception and expression of language through any modality, maybe oral or written communication. Second, social interaction, which will help
in inclusive education. And the third is development of inclusive communication environment. For the case description, over to Ishan. Case description. So, participant of 26-year-old female with a diagnosis of mild IB came at the department with the case history of asphyxia at birth, tongue tie got operated at the age of 6 months, and she also had delayed language, motor, and social development management, and the average level of educational performance throughout her academic year. With also, she had completed her graduation degree and currently pursuing vocational training course in basic computer training. And assessment was carried out in two phases. First is language, and other one is speech. In language, we have administered the self-assessment tool, which is clinical evaluation of language fundamentals and the linguistic profile test, that is LP. For speech, OPME, that is oral territorial mechanism examination, for articulation test in Hindi, Grabbar scale for perceptual analysis of voice, MDVP, multiple dimensional voice profile for instrumental analysis of voice and speech. For speech and language therapy, few goals were taken. Receptive and expressive skills, which include semantic and syntactic structure, pragmatic skill, which includes turn taking, topic maintenance, response to conversation. For correction of speech sound, few words at the word and sentence level were targeted. Maintenance of prosody in continuous speech, literacy enhancement for reading comprehension, and the overall intelligibility of speech was improved. These were the the procedure what we followed during the assessment part. Now move on to the results. First, language and evaluation findings in the LPT test, that is linguistic profile test. The receptive and expressive language age was 6 to 7 years, and patient was having difficulty with conditional clauses, synonyms, PNG markers, and tenses. Along with that, language receptive scores were 66.6% and language expressive scores were 50.8%. For self-finding, score of 82 in core language score was noted, and receptive language index and expressive language index suggestive of borderline severity of language. And semantic relationship and sentence examination was affected, and they also had poor score on those. Next up, we have pragmatic profile, where 3 sections are given, as you can see in the table. Section 1, rituals and conversation skill. Their score was 33 out of 72. Section 2, ask for, gives and response to information. Their scores were 48 out of 80. And section 3, non-verbal communication skills. Their score were 28 out of 48. The patient had poorer score in pragmatic task of section 1 and section 2, but had better score for the section 3. Let's move on to the milestone for early communication skill, where we have taken 4 domains: syntax, semantic, phonology, and grammatics. Scores on the syntax were ground stage 4 to early stage 5. For semantic, it was 48 to 60 months. For phonology, it was ground stage 4 to early 5 stage. And for pragmatic, it was 24 to 30. These were the findings for language evaluation. Now we move on to the speech evaluation findings, where we have done the OPME examination, that is our oral peripheral mechanism examination. Patient was finding the difficulty in jaw movements, and patient was unable to elevate the tongue properly during the speech and the non-speech task, but more difficulty noted for the speech task. For the photo articulation test in Hindi, aspirated speech sound of Hindi was substituted by unaspirated phoneme in initial, medium, and final position, and the distortion of liquids, the and the sound present as a word in the sentence. For speech intelligibility rating, AYJ NIHH, 7-point speech intelligibility rating scale was administered with the findings of level 3, that is suggestive of understanding with concentration and occur, especially via sympathetic listening. Next, we move on to the voice analysis finding, which is our of instrumental analysis, multidimensional voice profile. And you can see the graph. The red indicates the deviation in the parameter, which is frequency and amplitude perturbations are affected. Speech and language therapy. The case underwent individualized speech therapy. Total number of sessions are taken were 80, with each session of 45 minutes. Long-term goal was to target the functional communication skills, and we have targeted 2 short-term goals. First is receptive and expressive language skill, with comprehension of complex sentence of different syntactic structure and understanding of auxiliary verb, tenses and definition and follow direction.
Formulation of simple sentences with a different grammatical and syntactic structure of Hindi language. Recording of structure with SOV structure, that is subject object verb structure. Sentence assembly to start with. For pragmatic skill, initiation and ending of conversation along with introduction and maintenance of the topic and turn taken in conversation. For prosodic aspect, maintenance of the intonation in different type of sentences, stress and appropriate words in a sentence, use of pauses in a sentence to improve speech intelligibility. At the end, you can see a graph. It's a pre and post comparison of scores on the language and literacy part. So orange is indicating the pre one and the blue one is indicating the post one. For the conclusion and discussion, it's over to Saurabh. In the discussion part, the present case study aimed to understand the efficiency of speech language therapy in facilitating education in an adult with mild intellectual deficit. The score of administered test client observation of the present case indicate deficient speech and language skills secondary to mild IQ. Oral language serves as a foundation for reading and writing skills. Though oral language skills individual can become successful as they wade through a variety of academic concepts and challenges. Individuals need to be able to speak academic oral language in order to become successful learner and reader in the classroom. The US National Early Literacy Panel in 2008 officially identified that oral language as a key factor which consistently predict later literacy achievements. Oral language is most common way that teachers share information with students in a classroom, making oral language crucial for learning in all academic areas. It is also critically important for development good literacy skills, as children need to grow on their oral language skills in phonology, vocabulary, grammar, when learning to read and write. In the end, our poster concluded that the ability to read, write, and comprehend is essential to understand of the world around. One's ability to achieve it, both academically and professionally. Speech and language therapy play an important role in ensuring that all individuals have access to opportunity for literacy development and comprehension. There is a significant relationship between spoken and written language and speech language therapy. Speech and language therapy plays role in the literacy growth by improving language skills for lifelong achievements. Thank you. Any question? No. Yes, presenters. All right. It was a wonderful session. And can we please have a big round of applause? For all this not only gave such an informative and insightful presentation, but also they stick to the time bound of 10 minutes. So can we please have once again? Now, I would just like to say a few words. मुझे पता है सब अब घर जाने. I think this is the last session. But you have the time. Huh? You have time. I have time. So, would you like to sing or should I? ठीक. पहले मैं कह देती हूँ फिर इनका well, मैं 25 साल से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, पर मैं कभी भी इस तरीके के कॉन्फ्रेंस सेमिनार सेशन वर्कशॉप में कभी नहीं. And I would like to thank Ankita, who is also my relative, a very dear. She's just like my daughter. And Sangeeta ji, who actually, took me to the journey of this particular institute, which is Manovikas Charitable Society. She told me how it started and how she got engaged and associated with this wonderful, society. And मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, पढ़ाती मैं भी हूँ, पढ़ाती आई हूँ से. आप लोग भी ज्यादातर फैकल्टी है शायद या फैकल्टी बनने वाले हैं, जैसा मुझे लगा है. आप लोग रिसर्चर्स पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, बढ़िया बढ़िया पेपर किए हैं. आप लोग भी टीचिंग करते हैं और एक मेजॉरिटी है जो स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं. शायद उन लोगों की मेजॉरिटी, आप लोग शायद माइनॉरिटी में. तनख्वाह दोनों को मिलती है,